एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एलिवेशन इन लाइफ का चैप्टर नंबर 11 मोशन एंड टाइम। व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू विल फाउंड certain things change their position with time, while certain other things do not. Your house, almirah, chairs, etc. do not change their position on their own. Consider the example of non-living things which are not in motion are said to be at rest. A person walking on a ground and a flying bird both change their position with respect to their surroundings, and we say that they are moving. Motion and rest. In our daily life, motion and rest are important aspects. How can we define motion and rest? In moving bodies, there is a continuous changes in their position from time to time. Imagine that you are traveling in a moving car. There may be other people with you. Is there any change in your position with respect to another passenger sitting by your sides? See outside from the window. That do you observe the trees, houses, lampposts, etc. are passing by you with a great speed, but actually houses, poles, etc. are not moving. It is actually because you are moving with the moving car. The position of the trees, houses, buildings does not change with time, hence they are said to be stationary or at rest. Motion is the change in position of an object with respect to time. If the position of a body does not change with time, then the body is said to be at rest or stationary. Types of motion. अब हम मोशन के प्रकार के बारे में समझेंगे. The different types of motions are as follows. Translatory motion. A motion in which all parts of a moving body move uniformly in a same line or direction is called translatory motion. All particles of a body executing translatory motion move in the same directions, traversing parallel paths. For example, when you observe a person walking on road, you see that all their body parts move uniformly. Translatory motion can be classified at rectilinear and curvilinear motions. If the body moves along a straight line, its motion is called rectilinear. For example, a ball rolling on a flat ground, water flowing from a tap, a boy sliding down a slope, etc. If a body moves along a certain path, its motion is called curvilinear. For example, a dolphin taking a dive, a train taking a curved path in a hill station, etc. Rotatory motion. In rotatory motion, the body moves about a fixed axis without changing in its possible. Every particles of the body described a circular path and centers of concentric circles lie on the axis of rotation. The wheel of a moving vehicle, the hands of a clock, a spinning tape, etc. are some examples of rotary motion. Oscillatory or vibratory motions. A motion in which an object moves to and fro about a fixed point is called an oscillatory or vibratory motion. A swing machine needle, movement of a seesaw, swinging cradle, a pendulum of work, clock, motion of our hands while running, etc. are some example of oscillatory or vibratory motion. Circular motion. सर्कुलर यानी केंद्रीकरण यानी घूमना. A motion is in which the body traverses a circular path is called circular motion. Each particle of a body executing rotatory motion executes circular motion. Random motion. पांचवा जो प्रकार है मोशन का वह है रैंडम मोशन. द मोशन विच इज एन
haphazard manner in all possible directions is known as random motion. A motion of house flies, a motion of football player on the ground, etc. are some example of random motion. Number 6, periodic motion. The motion which repeats at regular intervals of time is called periodic motion. The revolution of the earth around the sun, the hands of a clock, heartbeat, beat, pulses, the passage of the moon, etc. are some example of periodic motion. यानी जो पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर काटती है, जब जो सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है और जो मून है वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो वो जो चक्कर लगाता है वो एग्जाम्पल जो है वो है पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है. नॉन पीरियोडिक मोशन, इफ व्हीकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन रोड, we can easily identify which one is moving faster than the other. The motion that does not take place at regular intervals of time is called non-periodic motions. The earthquake, landslides, storm, etc. are some example of non-periodic motion. Slow or rushed, fast. We know that an object is said to be moving when it is changing its position continuously with respect to its surroundings, but if two bodies are moving them, how can we judge that which moves faster, which object covers more distance in less time, and which moves slower? How do you decide which object is moving slow and which one is moving fast? For example, in given figure, a car moves faster than a bicycle. It means the distance covered by a car in a particular time is more than the distance covered by a bicycle in the same period of time. आप जानते हैं कि कार की जो स्पीड है वह ज़्यादा होती है बाईसाइकिल की स्पीड से, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा फास्ट हुई? क्लियर है कि कार फास्ट चलती है. तो ये जो एग्जांपल है स्लो और फास्ट, सो वी कैन say that the distance covered by an object in a given interval of time help us to identify which one is faster or slower. इस तरह से हम किसी चीज़ को ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ फास्टर है और कौन सी चीज़ स्लोअर है. स्पीड मीन्स गति. In the above example, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a large distance covered in a given time. The best method to find out which of the two object is moving faster is to compare by the distance covered by them in a unit time. एक निश्चित समय में अगर दो कारें एक साथ निकलती है और कोई तेज़ गति से चलती है और कोई स्लो गति से चलती है, तो जो फास्ट गति से चलने वाली कार है वह फास्टर कहलाएगी. इन जनरल वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी is the distance it travels in unit time. Thus, the distance covered is in 1 second gives us an idea as to how fast the car is moving compared to that of bicycle. The unit of time could be 1 second or 1 hour. Speed, distance covered, time taken. Speed यानी गति, कितना समय कितनी दूरी तय कंप्लीट की कवर की और कितना समय लिया. तो वेयर एस यानी स्पीड, डी मीन्स डिस्टेंस और टी मीन्स टाइम. तो द सेल स्पीड लिमिट यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ms is if the distance is in meter and time is in second, the speed is in ms. मीटर और स्पीड सेकेंड में है. If the distance is in kilometer and time is in hour, the speed is in kilometer and hour. इस ढंग से लिखा जाएगा. एग्जाम्पल, a school bus takes 45 minutes to cover a distance of 18 kilometer. Calculate its speed in kilometer, hour and meter and second. Solution: time 45 minutes, 45 hours अपॉन 60 इजिकल टू 3 आवर अपॉन 4. तो क्या होगा
कि कैसे डिस्टेंस निकलेगी कि 18 किलोमीटर हुआ, जिसे स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड यानी d, टाइम टेकन है t 18/3/4 किलोमीटर हावर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड अपॉन 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 24 किलोमीटर जो है उस गति से यह स्कूल बस चलती है। लेट अस फाइंड द स्पीड इन मीटर और सेकेंड। डिस्टेंस है 18 एंड 1000 मीटर, टाइम 45 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स। तो इसको इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 66.67 मीटर या सेकेंड। In practice, we generally measure distance moved by a body over a time period of many seconds, but it is not possible as car seldom moves with a constant speed over a large interval of time. However, the speed calculated here is actually the average speed of the car. Average speed, total distance cover upon total time taken. इस ढंग से ये अपने को मैथ्स की तरह इसको एवरेज निकाल लेंगे और इसका हल करेंगे। इस तरह से दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक कार्स, ये जो एग्जाम्पल है वो फिजिकल क्लास होगी तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ ए व्हीकल्स लाइक कार्स, हाउसेज, ट्रक्स एक्सेट्रा, यू मस्ट हैव सीन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर. The speedometer records the speed of the vehicle at a certain point of time. On the speedometer there is another meter called odometer which records the total distance moved by the vehicle. आपने देखा होगा कि व्हीकल के आगे ओडोमीटर, स्पीड मीटर लगा हुआ होता है, जिससे हमको पता चलता है कि किस गति से यह वाहन चल रहा है। यस, अब अपन यहाँ तक तो इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ चुके। अब यहाँ से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से अब हम इसका अगला चैप्टर, इसका अगला पार्ट अगले उसमें पढ़ेंगे। और इस चीज़ के यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया उसका बुक पार्ट में आपको उसका PDF सेंड करूँगी, जो आपको बुक में फिल करना है। बाकी का जो चैप्टर है वो और इसका नोटबुक पार्ट वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।